Hi, Veer. Thank you so much for joining us on Blitz Business. It's a pleasure to have you. Same here, yeah. Thanks a lot for having me. Awesome. Let's get started. So, Veer, little bit about yourself first, then Sure, plus gold. Yeah. sure. So, I started my journey like around 16, 17 years back when I started as a filmmaker. Started making short films, documentaries. One of my short film eventually went on to win 16 national level film festival awards. And that kind of gave us a lot of recognition. And I come from a very small town called Nagpur, right? So got a lot of recognition exploring the world of international films and so on. And during that time, I saw this movie called Social Network, right? And thought like, and I can be the next Mark Zuckerberg of the country, right? So started learning how to program, how to code. I was in second year engineering at that time. So with me and a couple of my friends, we started a social network called as MyWindow. Scaled it. By the time I graduated, we had like around close to quarter million monthly active users. We were grossing in somewhere close to 1.3, $1.4 million annually. Again, it was quite a decent scale, and considering we were completely bootstrapped, operating it from Nagpur itself, our costs were very low, right? So it went profitable. When it was profitable, I took my exit, started dabbling into a few artificial intelligence IPs, created a few IPs, sold it to a few companies, and in 2017 started a company called Vdal Labs. And Vdal Labs was primarily a retail analytics company, which we started in late 2018. Within the first year itself, became profitable, right? And eventually decided to go ahead with an acquisition offer. So when we went out to raise capital, we got an acquisition offer, so decided to kind of take that. It was decent offer. Worked there for one more year after exiting the business, and then eventually started working with this company called BetterPlace, right? So BetterPlace was is one of the leading blue collar HRMS platform, right? And there I was leading the growth for B2C, and my co-founder Raj, he was leading the B2B initiatives at BetterPlace, Mhm. right? And that is when we started exploring fintech opportunities for blue collar. And while doing that research, realized that India as a nation, right, considers wealth very differently. Let's leave aside the 10 15 million investors from zero and grow stock markets के investors को अगर हम लोग side में रख दे, तो जो majority India, 95% India, they consider wealth either real estate or gold, right? So decided कि let's build something to address the Bharat of this nation, right? Probably the people who earn less and have big aspirations, right? So that is how the journey of Plus Gold actually started. Wow. So, Yeah. quite a lot of um, achievements and many questions in my mind. First is on the short film. So, do you still Yeah. make short films or not? I am still curious. I still do kind of create content, maybe like in Instagram reels or self-hosted content is something that I keep doing. Right, that's still an interest. I love designing, so that was the passion that started with filmmaking only. I still design a lot of stuff. The website that you see, the app that you use at Plus Gold, the first level of design was done by me. Awesome. And then coming to Veda Labs, you mentioned Veda Labs, yeah. So, in Veda Labs, what was the specific use case you were trying to solve? You mentioned retail analytics, but any Yeah, specific within retail yeah, analytics? yeah. So what we did is we were using CCTV camera videos, right, and Hmm. doing analytics on that. So Okay. as a retailer, on our dashboard, you'll get to see how many people walked into your store on that day, how many people walked out, who were the repeat customers, right, Hmm. and what was your staff attendance, where all the customers went in your store, right? And which was the hottest selling SKU where people spent most of their time in the aisles and so on, right? So these data points kind of helped a lot of retailers. So let me give you an example of a very large automobile dealership, right? Selling a lot of custom bikes and all, right? So for them, they hardly had 100 200 walk-ins in a day, right? Because it's a big ticket SKU, but they wanted to understand where all the customers are spending the time, right? Which SKU is the most hottest one,
right? So this kind of analytics became very reasonable for them at the cost we were offering. So like, that was the product that we had. And then there Understood. were custom use cases, like, for example, some shopping malls had use cases where we were identifying theft, right? If someone is shoplifting, someone is just taking an item and just putting it in the bag, right? So classifying those actions and so on. Yeah. And then finally now in Plus Gold. So in one line, what are you guys doing at Plus Gold? So at Plus Gold, we help Indians to save in gold and redeem in jewelry. Traditionally, India has been saving for gold at jewelers. So most of the jewelers in the country, they run a 10+1 scheme where you save for 10 months and the jeweler matches one installment and you can buy jewelry. So we at Plus Gold are making it easier for the consumers to save with us and redeem at any jeweler in India or buy jewelry from us online. So how does it work? What's the user flow, for example? Just So walk for us. example, when you download our app, you can define how much rupees or money you want to save in gold. Right? Let's say you say today's like 7,800 is the price for gold today. You can define okay, I'll save 100 rupees a day, for example, right? You can set up an auto pay on UPI, and that 100 rupees based on the gold price starts getting accumulated in your wallet. Now, once you have occurred a good wallet amount, you can either withdraw it in the form of coin, which is a gold coin, which can be delivered at your home. You can redeem it in the form of cash, which instantly gets settled in your bank account through UPI, or you can directly convert it into jewelry. Now, when it comes to jewelry, you can either select some designs on our app that this is the jewelry that I want and it will get delivered to you, or you can go to any of our partner jeweler stores, right? So we have around 150 brands that are partnered with us, and those partner brands will give you additional 10% discount on the invoice value directly. So how does it work? So basically you're saying, so do you buy that equivalent amount of gold at So it's a your end? digital gold. It's digital gold, right? So like when you buy a digital gold is kept for you. Physical gold is bought and kept in a vault, which is insured by a bank. So you guys are then buying equivalent amount of physical gold for each Yes. 100 rupee or whatever Yes. customer is spending. Okay, so it's like in SIP for Gold savings. gold savings, and then you can have an additional layer on top of it to convert into coins. Coin, cash, or jewelry, whatever you want. Yes. The important question then, you are the gold expert now in my eyes. What happened to the gold price in last few weeks? It went up, then government did something, it went down. Further it went up, then it's again down. I have no clue. I lost the track. Help me Yeah, break so it down. basically जैसे बजट आया राइट बजट आने से लोगों के सो इन द बजट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो कम कर दी राइट बाय 9%. तो लाइक वो 15 से आई थिंक 6% से कम हुई थी 15 से 9% पे आ गई थी राइट. लोगों को ये सेंटिमेंट आया कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई है तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा राइट. वो सेंटिमेंट की वजह से गोल्ड का प्राइस गिरा. गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कुछ राइट $2,498 था before the budget was announced, $500 when the budget was announced, and right now it's $2,600. So international market में right increase ही हुआ है rather. तो वो मतलब मोमेंटरी डिप था. मोमेंट्री डिप था राइट. मोमेंट्री डिप था और जैसी धनतेरस आया था वो फेस्टिव डिमांड क्योंकि इंक्रीज हो जाती है राइट और सप्लाई लिमिटेड होता है तो इसलिए प्राइस इंक्रीज हो जाता है. तो इसलिए प्राइस इंक्रीज होता है और अब जैसे आप देखोगे धनतेरस तक के आई थिंक 8200 तक राइट बट इट हैज केम डाउन टू अराउंड व्हाट 76 7800 अगेन right. So that is there, but if you look at it in the long term perspective, in this year alone gold का कुछ appreciation around 25% रहा है. वाओ. January में the gold was priced at 6,300 rupees per gram. वाओ. Right now it's 7,800. Right. तो मोटा 1,500 रुपए का तो appreciation है ही 25% का. Right. So that is how the gold has appreciated in this year. And if you actually look at it in the long run, आज अगर आपने gold देखा है, next year end you'll see at least close to 1 lakh is where the estimated number is per gram, per 10 gram, right? Where the gold prices will be. 1 lakh. Yeah, because like geopolitical tensions है, right? Wars तो खत्म हो नहीं रहे, and like and given the current situation where China factually has discovered a mine of gold, right? A cave of gold which is filled with gold, right? So now China has 80 billion worth of gold, which is like close to about 6-7 lakh crore worth of gold extra, right? As their reserve. So geopolitical tension बढ़ेगा.
एंड गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा. अब जैसे सिर्फ इस साल में ही इंडिया ने कुछ अराउंड 900 अपने रिजर्व में वापस लाया, राइट. सो एज एंड व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स बाइंग गोल्ड, राइट, प्राइसेस विल स्टार्ट सोअरिंग अप अगेन. तो आपका टारगेट है 1 लाख इन 10 साल. नहीं, 1 लाख एक साल में होना. अगले दिसंबर तक यू आर सेइंग 1 लाख. या यू आर ऑलरेडी एट 800 लेकिन 8,000. 20% अप्रिसिएशन 1 या 2 साल में आ जाए. So then coming to this business model, तो gold का तो ये सीन है. So आप लोग then you are also doing in silver में भी कुछ you guys want to do it या plus gold ना? नहीं. सो बेसिकली जो पार्टनर जूलर्स है वो सिल्वर डेफिनेटली बेचते हैं, राइट. और हम लोग अभी डिजिटल सिल्वर पे अभी हमारा उतना फोकस नहीं है. while I have few partners who are working on digital silver, we might think of that direction, but again, like, our customer base is majorly focused towards gold. तो फिलहाल के लिए गोल्ड पे ही रहेगा. सिल्वर में भी हम लोग ला सकते हैं, मे बी एज एन इंसेंटिव और अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म, right? Because you have to consider that silver, while it's a precious metal, but it's also a bulky asset, right? Business, let's dive deep into this. Like, who is buying into this space? Because you have two very well established instruments. एक तो Yeah. sovereign gold bond scheme जो RBI की निकलती है, which has turned out to be very profitable if you bought the True. first tranche, second tranche, third tranche, Yeah, whatever I've first. I've bought it in every series, so Yeah. I've gained a lot. Yeah. Yeah, it has been excellent. Second is आपके gold के ETFs हैं, right? That is also there. Very well established instruments, right? Yeah. Then there are other smaller players who are offering different form and fashion of instruments. So who are the people actually buying into this sort of concept? Keep digital gold we want to buy and then redeem in certain other form, because you can always do that. I'm now playing the devil's advocate. Yeah. Like ETF में भी आप कर सकते हो. Yeah. So I think, so see, as I said, like, SGBs and ETFs are a very great, like, what you can say, tool for consumers like us, investors. But when I talk about my user base is definitely not aware of SGBs and definitely don't understand ETFs, right? These are the customers who are probably the tier 3 of our tier 1s, right? People who have probably migrated from Yavatmal, Akola, right, and have shifted to probably Mumbai and doing basic work, right, earning close to 4 lakh below a year, right? 70% of my audience are users are earning less than 4 lakh, right? And they are saving average 50 to 60 rupees a day. Now this audience is like, they don't have access to a lot of cash. Forget the understanding of any other asset, right? That's why when I started saying, I said, like, in India, majority of our population understands wealth very differently, right? For them, stock market, ETFs, mutual funds say, but they don't understand it, right? For them, the only thing that is there as a worth is real estate, उनका खुद का घर, right? और gold. आज एक मिडिल क्लास इंडिया की, लाइक, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? खुद का घर होना चाहिए, राइट? दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टू अचीव दैट गोल. एंड उसके बाद खुद की सेविंग्स थोड़ी बहुत जो गोल्ड में होती है, क्योंकि बच्चे की शादी करनी है या खुद के लिए कुछ, राइट? तो पूरे इंडिया का सेंटिमेंट ही ये दो एसेट्स के अराउंड वेल्थ को लेकर. But do you believe buying a house? थोड़ा deviate कर रहे हैं. But do you या डेफिनेटली. बट मेरे हिसाब से, लाइक, फॉर एग्जांपल, इफ यू are trying to buy a house in a metro, it makes no sense, right? Like, for example, my hometown is Nagpur, right? Not that expensive real estate. Buying home there makes sense, right? Yeah. See, so I think, like, I'll tell you, land registry, stamp duty, construction included, a good triplex villa costed us like around 80 lakhs. Oh, wow. Full construction, 1800 square feet. Nice. So, like, it's cheap compared to, like, where we live, Mumbai, Bangalore, like, not worth it. For sure, for sure. Okay, nice, nice, nice. Okay. So your suggestion is ki except metros where there is more affordability still left outside metros. Yeah. I mean, For like, sure. even outside metros, like, for example, if I'm in Bangalore के beyond, right, जो कर्नाटक border है, वहाँ पे land are still cheap, right? You can still buy places, and again, it's still good in investment. But हाँ, मतलब the nature of real estate is very illiquid, right? So
like, if you're buying it just as an investment, so you have to consider a very long term perspective, at least 15-20 years, because even if you put it in the market to sell, right, it's not going to sell easily. So then coming to this plus code. So how do you guys now make money? You are basically making money. There is a subscription fees, you transaction fees. How do you make? So, like, we don't charge anything to our customers, right? We make money when the user transacts, which means, like, for example, you bought 1 gram gold, let's say, right, at market price. So when I place an order for 1 gram gold to a bullion partner, right, because I'm buying the gold from the bullion partner and keeping it in a vault, मैं bullion से खरीद रहा हूँ तो bullion मुझे sales commission देता है because मैं उसका सोना बेच रहा हूँ, right? So he gives me 2% commission, right? We are in the process. Mostly, I think 5 to 6 months from now, we will have our own digital gold, which means we will be trading gold on users' behalf. So we will be keeping a bigger spread क्योंकि गोल्ड के बाय सेल में मोटा मोटा 4 से 5% का स्प्रेड. So who are these bullion players like? So, like, for example, let's say for us it's RSBL, Riddhi Siddhi Bullion. So Riddhi Siddhi Bullion में जितने भी gold ETFs है, it's 70% gold इन्हीं का है, right? So these guys were the ones who bought gold ETFs in the country, right? So Riddhi Siddhi Bullion is the biggest bullion provider, followed by MMTC in India. So when we are building our own gold, digital gold, we will be probably partnering with one of these, but having our own vault, keeping it in our own control, having our own insurance partner and our own logistics partner. So then I assume it must require like RBI licenses, etc., to become a bullion. No. So for a bullion partner, there is a regulation, right? You need a particular license to import and export and Yes, trade right. gold, right? But whereas for us, because we are not doing the trading, right? We are not importing gold, we are just buying it from the bullion, but the vault is ours. We only Yeah. need GST registration. But if you want to become a bullion, Oh yes, there's a like very strict regulation around importing of gold. Only certain few have been given those licenses. So there's a particular checklist from the government that you need to comply to, and then you get that license. It's an any import license. It's an import export license, but for precious metal. any requirement you're aware of? So obviously your book size needs to be very huge, right? Right. You need to have that much capital, right? You need to have access to what you can say, your collateral, right? If the company goes bankrupt, your collateral needs to be enough of the volume that you anticipate to trade, right? And you need to have a bank who can give your guarantee. So there are multiple things. Like, for example, when you try and start a bank in India, right? RBI will ask for $100 million security deposit to RBI. If in case the bank fails, right, that $100 million will be used to bail out the customers. And similarly, like, for example, in every bank, when you save your money, right, वो सिर्फ 5 लाख तक का insured. So that $100 million will be utilized at 5 lakhs. तो वो उस तरीके से limit defined होती है. ये 5 लाख वाला पॉइंट ना बड़ा मेरे को चुभता है. ये समझ नहीं आया मेरे को कि ये व्हाट इज दैट लॉजिक ऑफ दिस 5 लाख रुपए. पहले 2 लाख था. हाँ, बट फिर भी क्या डिफरेंस पड़ा? So आई थिंक मैं बताता हूँ होता क्या है ना, सी बैंक भी खुद का पैसा तो है नहीं, हमारे ही पैसा ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, राइट? एंड ऑल्दो नेशनलाइजेशन हो गया है बैंक्स का, बट फिर भी देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड. तो द सिंपलेस्ट वे इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दिस क्लॉज, द बेस्ट वे इज you diversify your funds, and instead of keeping it idle, you diversify your investments. You put it in assets, put it in gold, put it in mutual funds, and itna rakho ki even if something happens, you are covered in that insurance limit. And if that is the reason why, if you look at the best of the billionaires and best of the founders in the country, right, they don't have liquid assets. They directly keep those investments in float, and whenever is required, they liquidate those investments to utilize. There was this one interview I was seeing from a US hedge fund or something. So उसने कभी हमारा most majority पैसा is in treasury Yeah. notes. उसने कहा बैंक का पता ही नहीं. हाँ, एक्चुअली बैंक्स का you never know यार, लिमिट बहुत वही है, छोटी लिमिट है. You cannot trust your lifetime savings to the bank. That's true. That's true. So then, Veer, what is the plan with Plus Gold now? So while we started with a simple app for consumers to save in gold, now in next 6 months our plan is to completely become a full stack solution. When I say a full stack solution, we are building a
integrated solution for gold industry, where we will have our own digital gold, which we will start licensing to other fintechs who can introduce gold savings backed by Plus Gold on their app. That is one. Our app will be there. And then we are creating last mile jewelry, which means our consumers will be directly able to convert their savings into jewelry without the hassle of going into a jeweler store or so on, right? And all of this will be open to any developer out there as a API, right? So anyone can use this app. So the idea is to enable anyone to use and be fully integrated in a gold solutions. You don't want to enter into the space of loan against gold. See, gold loan by default is a very crowded market. And if you stay in Bangalore, यहाँ पे हर गली में एक gold loan provider मिल जाएगा. ठीक है. Tapping into gold loan is a very offline centric business model, which requires a very different focus, to be honest. We definitely are learning, we definitely are observing that market, right? We keep on speaking to the best of the companies in this space, like for example White Gold, R Gold, and others, right now we are just trying to learn, right? We haven't made a call that we will enter into gold loan or not, right? We may partner up with some of these best companies to offer the loans, but right now we have not made that call yet. And I think it's inherently very difficult business, as you said, because we had like a lot of gold against company, and there were some companies who were offering the cost becomes very difficult. They were coming to home to So because like you for have example, Rupeek, for example, Rupeek at like few years back was valued at $600 million valuation, right? Right now did a very significant down round, right? So it's not easy considering the cost. Like for example, RBI ने repo rate set, right? 100 रुपए का गोल्ड है तो आप 70 रुपए से ज्यादा का लोन, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैप है. And as a platform, I cannot get into the hassle of becoming an NBFC to give loans. अगर NBFC तो पैसा कहाँ से लाऊंगा, right? So most of the fintechs, they prefer becoming a distributor. Having a distribution model limits you by earning, your cap is very limited. You hardly earn 1 or 2%, right? 1-2% के लिए इतना बांधा लेना कि मैं बंदा भी भेजूं, गोल्ड भी वैल्यूएट करूं, गोल्ड को सिक्योर भी करूं, it's very बचेगा. costly. It's very costly. That is true, but इसमें there is this also. What was this other एक और innovative model कुछ किसका आया था? Skipping my head. This guy is selling Muthoot. Mutut. Yeah. See, I think gold loan mein, as I said, it's a very offline model. You Yeah. need stores, Stores. right? You need physical locations, and वो physical locations में आपको अमिताभ बच्चन की फोटो चाहिए, वरना लोग walk in नहीं करेंगे, right? So it's an offline driven model. That is the reason when we started, we had to go for a Bollywood celebrity, right? आप पे कौन सा celebrity है? हमने लिया था सोनाक्षी सिन्हा, right? Wow. Yeah, we recently ended that contract, but we had a good 6 months engagement with her. Obviously, नहीं for sure. मेरे ads और campaign पे CTR मेरा 4x improve हो गया था. तो जहाँ पे मेरे 1200 की CAC थी, वो गिर के almost 250-300 पे आ गई थी. तो it was easier. That's quite a lot. ये तो सब बिकता है. कौन से हम लोग ने नहीं हम लोग ने बेसिकली Instagram भी यूज किया था, राइट? अब तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया तो कंटेंट हटा दिया. डिजिटल यूजेज राइट होता है इन सब चीजों का. बट वी डिड IPL, वी डिड वर्ल्ड कप, तो हम लोग ने ये सब में हमारी DVCs करे थे, काफी हेल्प हुआ. नहीं 6 महीने का यूज. बट यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे तक एड इज स्टिल लाइव. फॉर श्योर यार, देखना उसमें टीवी के हॉटस्टार का एड है, जो इंस्टाग्राम पे हम लोग ने एड्स चलाए थे, स्टैटिक्स एंड सो ऑन, दोस डेफिनेटली हेल्प. और वहीं पे देख लो, आप मुथूट का भी देख लो. लाइक there are two groups, Muthoot Blue and Muthoot Red. Muthoot Red has अमिताभ बच्चन. उनके कोई भी स्टोर पे जाना, सब गेट पे एक अमिताभ बच्चन की ऐसे नमस्ते, राइट? एक लोकल आदमी देखेगा, बोले हाँ यार अमिताभ बच्चन दिख रहा है, तो ट्रस्टेड जगह है. बट ये एक्सपेंसिव रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इवन फॉर 6 months फॉर यू गाइस टू गेट ऑन बोर्ड. It was there, the cost was there. The cost was very heavy, but I think the ROI was also better. So did you guys calculate it in terms of अगर आप Yes. So we decided to calculate it in a 6 months timeline, right? कि अगर मैं 6 महीने में एक particular growth achieve करना चाहता हूँ, right? In terms of ROI, valuation, revenue, and everything, right? What is your user acquisition cost? So before that, as I said, our CAC was close to 1,400-1,500 per user. Across all channel, average you are saying? This is average. But that's quite high. Yeah.
So because when we started, I'm talking about January this year, right? Before Shark Tank happened. Shark Tank हमारा एयर हुआ था February 23rd, राइट? वो टाइम पे हमारे कैक्स, जब तक शार्क टैंक नहीं हुआ था तब तक के हमारे कैक्स ये थे. शार्क टैंक आने के ये कैक 1500 से 800-900 पे, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वी वर यूजिंग शार्क टैंक के कोलैटरल्स एंड सो ऑन, एंड ऑर्गेनिक काफी अच्छा इंप्रूव हो गया, राइट? आफ्टर दैट जब सोनाक्षी आई ये कैक और कम हुआ और हमारा ऑर्गेनिक और इंक्रीज हो गया, राइट? एंड अब हमारा जो स्टेट है, वी आर एट 70-80% of our users are organically coming to our platform. Our performance spend is next to zero. We only spend on creating a lot of content, and we produce like 40 to 50 pieces of video content every month. Those content are in multilingual forms, and that is where we are getting our majority traffic from. And then we have our agent network. This agent network is going door to door, society to society, to explore and explain our products and so on. No, the agents get paid only if there's a transaction. Yeah, sure. But within Sure. that 2% margin, or how is it? No. So there's a fixed fee on every bracket, right? So we have a bracket, तो इतने का होगा तो आपको इतना मिलेगा, and so on, right? So the agent network is 27% of our traffic, 43% is organic, and remaining is referrals and word of mouth and so on. Let's talk a little bit about Shark Tank. Bought Shark Yeah, experience and the peak. Yeah. अगर एक product होता Shark Tank, what is your honest review about Shark Yeah. Tank? So see, honestly, मतलब पहले 2 सीजन में मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे जिन्होंने फंडिंग उठाई थी. किसी ने अश्नीर से लिया था, किसी ने पीयूष से लिया, right? So I had similar understanding on the kind of traffic that they're gonna get, and it goes up and then it goes down, right? The problem that I've seen with a lot of contestants is that they didn't prepare well to continue this surge, right? So what we did, like for example, when we were in the tank, our episode was short for almost like 2 hours. 2 घंटे की pitch थी, ठीक. right? And while it was a grilling session, it was very fun. Varun, who is our shark, and उनका office और मेरा office almost next door है, right, in HSR. So he's very accessible, very supportive. So fortunately, he understood this market where we were trying to tap into. So that's why he decided to back us, and we got the money. I think episode air हुआ उसके 1-2 महीने में we got the funds. Uh-huh. How much you raised? Can you remind me? What was So it? we raised from Varun we raised 60 lakhs, right? But overall वो Shark Tank का round जो था उसमें we raised around 7.5 CR, right? Almost $1 million. तू सारा हाँ. वरुण का पूरा पैसा आ गया. What we did is we were very sure because funding हुई है, right? तो we were 80-90% confident कि episode तो air होगा, क्योंकि वरुण was there only for one episode, right? और उसने 2 ही कंपनी को फंड किया था, तो we were sure कि episode तो आएगा. And we knew that a lot of companies were not prepared for scale in the past, or they kind of over expected a lot of traffic but didn't happen, and they had to lose out on inventory and so on. So what we did is we decided to ensure कि जो भी peak हमारे पास Shark Tank से आए, right, we maintain that peak for few months, right? So what we did is and this is something that not a lot of founders will talk about, but we partnered with a lot of meme creators. Wow. Right? We partnered with a lot of meme creators. We said हमारा episode आने वाला है, अच्छे बुरे जो memes बनाना है बनाओ, right? And जैसे episode आया, एक peak आया, right? We had around total कुछ around 400-500 memes बने. उसमें से कुछ 3-4 ऐसे थे जिनके ऊपर 15-20 million की reach. And these content eventually became viral. We onboarded an agency partner who started creating viral content during that time for us, which again started getting a lot of views, right? तो हम लोग ने ensure किया February 23rd से, ठीक है, April end तक के हमारे पास वो peak इस content, right? During that time we ensured कि हम Forbes पे हमारा article हो, we ensured a good PR and so on. And हम लोग ने fundraise की news भी तब तक के लिए रोक के रखी थी, right? To ensure कि everything happens on time. And जैसे April का हमारा peak खत्म होने वाला था,
राइट। अप्रैल के एंड में हम लोग ने सोनाक्षी के साथ कॉन्ट्रैक्ट प्लान करके रखा था। तो वी एंश्योर्ड कि सोनाक्षी का जैसे कंटेंट हो 10 मई का। तो अप्रैल 30 को हम लोग ने एड शूट करी, 10 तारीख को हम लोग ने एड रिलीज करी। वो 10 दिन में हम लोग ने सोनाक्षी का एम्पलीफिकेशन प्लान करके रख लिया, राइट। फिर वो 10 मई से लेके एंड तक के, अभी तक के नवंबर एंड तक के, राइट, अक्टूबर एंड तक के, दिवाली तक के, राइट, वी एम्पलीफाइड दैट। ये तो आपने पूरा जूस, वाह। Yeah, मतलब you have to tap into these guys, like, the best of the meme pages that are there out there, right? Just You have, message. yeah, you just message them, like, someone from them will respond, right? Whoever responds, आप इनसे बात करो। हम लोग ने कुछ नहीं, हमने 2 interns को बैठा के रखे थे, कुछ 50-60 मीम पेजेस की लिस्ट थी, सबसे फॉलो अप करते रहते थे, 15-20 मीम क्रिएटर्स में। कितना लेते हैं मीम क्रिएटर? यार ये वैरी करता है, मतलब फ्रॉम 500 रुपीज अ मीम से स्टार्ट हो जाता है टू 50,000 अ मीम पे भी जाता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द रीच। देर आर गुड पेजेस दैट हैव 20-30 मिलियन फॉलोअर्स, राइट, विद गुड एक्टिविटी। अगर वो 5-10 हजार भी आपको चार्ज करे एक मीम का, दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, Worth it. right? And then, like, there's a very unexplored network that a lot of people don't understand is Telegram. Telegram is a kind of a, like, a very huge gold mine for D2C brands. Telegram pe there are so many channels, right? So many channels that are there who are sharing discount related deals, and उन channels में 4-5 मिलियन लोग हैं, right? 4-5 मिलियन users. Telegram के channels can itself become products if they start monetizing it, right? आपको कुछ नहीं करना है, बस इन channel के operators को करना है, they will charge you something, right? But you can distribute your, like, kind of offer, product, whatever you want in a steel deal kind of a pricing there, and you will get massive volumes. So to do that, what we did is, like, once Shark Tank happened, Sonakshi happened, we were sitting in June, right? And June में I was there, like, हमने टीम को बाहर लेके गए थे गोवा में. That's where we discussed कि यार ये peak हमको maintain करनी है. How about we create a feature that can get abused, right? So the simplest way was कि let's create a referral feature where the price money is, like, too good to be true, and let's see if people abuse it, right? हम लोग ने लिखा कि refer your friend and earn up to 50,000 rupees का gold, right? हमने रेफरल फीचर बनाया। शुरू में कोई ज्यादा पीक नहीं है। इंटर्न से अगेन, लाइक, टेलीग्राम चैनल में विद इन 2 days 23,000 नए साइनअप्स हु ट्रांजैक्टेड ऑन द ऐप टू पॉसिबली विन द रिवॉर्ड। 4 लोगों को रिवॉर्ड मिला, बट अगेन पीक आया, right? So it's just like, you need to keep spotting such opportunities in a very crude way, right? And figure out कि आप सबसे लीस्ट एक्सपेंस पॉसिबल। इस तरीके के टेलीग्राम चैनल्स, ट्रस्ट मी, D2C ब्रांड्स के लिए तो गोल्ड माइन है। दे शुड जस्ट फोकस ऑन स्केलिंग देयर प्रोडक्ट्स हियर। मामा अर्थ ने शुरू मामा अर्थ के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए मेरे। सिर्फ आप उससे पहले आप मेरे को इन इंटर्न का रिज्यूमे दे कि हम पे आएगा भी, ये है कौन? नहीं, डेफिनेटली यार। तो हमारी टीम में ना बेसिकली होता है कि जब भी कोई इंटर्न आता है तो उसकी ऑनबोर्डिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहले उसको सबके लिए चाय बना के लानी पड़ती है, राइट? एंड या बहुत फैमिली जैसा कल्चर है ना, तो फैमिली में सबसे छोटे को काम तो कराते ही है। Right, so yeah, I mean, like, but still, like, the best of the interns that are there with us now have become full time, and like, operating on their own, so it's good. ये आपने बड़ा टॉपिक जो थोड़ा सा तो पूछूंगा। मामा अर्थ को ये इट पीक्ड, और क्या रिकॉर्ड प्रॉफिट थे व्हेन द आईपीओ हैपेंड एंड Yeah, एवरीथिंग। the point is na ki Mama Earth was never a good business, रियली? right? I mean, like, if you look at it, 4 major manufacturers है cosmetics के इंडिया में, राइट? उन मैन्युफैक्चरर्स के नाम, लेकिन सब लोग उन्हीं से बनवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट, राइट? तो ये पूरा ब्रांडिंग गेम था मामा अर्थ का, राइट? दे स्टार्टेड विथ 1-on-1, लाइक वो अनियन शैम्पू पे इनका 1-on-1 ऑफर अभी भी चलता है मेजोरिटी स्टोर्स पे, आप, राइट? ठीक है, आप स्टोर पे, रिटेल स्टोर पे जाओगे, 1-on-1 इनके साथ में रखे होते हैं पैकेट, ठीक है? वन ऑन मतलब यू आर सेइंग वो फ्री? बाय वन गेट वन फ्री। यही तरीके से इन्होंने शुरू में स्केल लाई। लास्ट ईयर सॉरी, दे डिसाइडेड कि वी नीड टू पुश आवर ऑफलाइन गेम, राइट? हेवीली इन्वेस्ट किया ऑफलाइन में। इनमें इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिके, धूल खाए। रियली? बहुत बड़ी इनकी, अगर आप रिपोर्ट देखोगे अभी जो इन लोग ने फाइल करी है लॉस में, उसमें इन लोग ने देखा है
इनकी डेड इन्वेंट्री जो वापस आई है रिटेलर से, कुछ 100 अराउंड 90-100 करोड़ की इन्वेंट्री वापस आई है। वो तो पर कह रहे बिकी हैं नहीं। कि मास्टर वो दे आर चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। ये नए 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 तो इन लोग ने शुरू, फिर उसके बाद आपसे बॉटलिंग कर रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो मैं ऑफलाइन में भी जाऊंगा, राइट? तो ऑफलाइन गेम क्रैक करना इज नॉट दैट इजी। उसी तरीके से क्विक कॉमर्स का भी है, अभी फैड है, चल रहा है, हर चीज का क्विक कॉमर्स आ रहा है, ठीक है? इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। Yep. मतलब आप बोल दो कि भाई महीने का मैं 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, महीने का जो लॉस हो रहा है वो Zepto was $30 million or something अभी कुछ या recent 250 करोड़ का बर्न है भाई महीने का। almost है। तो वो तो मतलब बोलने की बात है, मतलब मैं तो सोने के धंधे में हूँ, रेवेन्यू दिखाने के लिए तो हजारों करोड़ का दिखा सकता हूँ, बट वही है, इट्स देयर। तो मतलब मामा अर्थ का तो फिर कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं इस हिसाब से, तो मतलब ये तो फर्दर टैंक ही हो। हाँ, एज अ सेड, लाइक सिर्फ मामा अर्थ की बात नहीं करूंगा मैं, इस कॉस्मेटिक वर्ल्ड में भी अभी D2C स्टार्टअप स्टार्ट हुए, मेजॉरिटी का वही स्टेटस होने, राइट? एंड होता क्या है ना कि लाइक व्हेन दीज स्टार्टअप दे डिसाइड टू गो पब्लिक बिकॉज दे हैव बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, दे अपॉइंट फ्यू बैंकर्स। अब वो बैंकर्स के, मैं बट अगर वो बैंकर मेरे को किसी कंपनी के आईपीओ में दिखता है की प्लेयर, मैं उस आईपीओ में नहीं लगाता पैसे, क्योंकि मेरे को पता है वो जॉकी है, वो 2 साल इस कंपनी के स्टॉक को चढ़ाएगा, फिर उसके बाद अपना पैसा निकाल के सबका पैसा डुबा देगा, ठीक है? और ये बैंकर काफी लोगों को पता है कौन है। काफी के साथ। एग्जैक्टली, राइट? तो ये ऐसे बैंकर्स जब मुझे दिखते हैं किसी भी आईपीओ में, मैं वो आईपीओ, बिकॉज दे डोंट लीव एनीथिंग फॉर रिटेल एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, वो खुद का पैसा निकाल के 1-1.5 साल में, दैट्स दैट द इज पॉइंट। But यप that's very harsh reality. This loses confidence for startups who wants to IPO and scale. You know, यप यप confidence gets dwindled. एग्जैक्टली, लाइक आप, लाइक फॉर एग्जांपल जोमेटो को देखो, राइट? मतलब at their best performance price they are at 250 rupees right now, right? Swiggy got listed at 300, 350, right? That's a crazy shit, right, exactly. I mean, like, डील आ रही थी भाई 500 रुपए में सेकेंडरी में खरीद लो, प्री आईपीओ खरीद लो, लाइक आई वाज लाइक यार, मतलब जोमेटो विद प्रॉफिट्स इज एट 250 राइट नाउ, राइट? यू आर आस्किंग मी टू बाय इट एट लाइक इन डबल द प्राइस विद ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट्स, तो वो सेंस नहीं बनता। Similarly, like, you look at like the best of the companies, like for example Paytm, right? People don't understand that Paytm is still profitable company, right? छोटी मोटी mistakes, compliance, right? But that doesn't mean कि वो company गलत है। If you look at last 4 months में Paytm का stock price सिर्फ appreciate हुआ है। Correct. हाँ, 400 से चालू हुआ था, they are close to 1,000 right? In next 6 months they'll cross their IPO band price, right? And people will make money. I bought Paytm on every dip. Really? Yeah, I'm a big believer in Paytm story. यार इंडिया में डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन लाया, मतलब फ्रॉम क्यूआर कोड पेमेंट्स टू वॉलेट टू यूपीआई, राइट? स्केल करने वाला पेटीएम ही Wow. है। अगले साल करना पड़ेगा। हो जाएगा, बट That's true. But उन पे regulatory जो आया था उससे they lost lot of business. हाँ, मतलब उनका यूपीआई बिजनेस हिट हुआ, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, बट नाउ दे आर गेनिंग, Yeah, व्हिच इज अ गुड पार्ट। that's a good sign. And I don't use any other UPI app, so like, I still use Paytm and only Paytm. Wow, that's So, good. and you'll see that, like, for a consumer who's using PhonePe will never switch to Paytm, and for a consumer who's using Paytm will never switch to PhonePe. क्या reason है? I don't know. I mean, like, it's just the simple. It's Ola versus Uber, Swiggy versus Zomato वाला use case. Yeah, नहीं. So मैंने क्या देखा है? मैंने user का usage pattern देखा है. Probably a person who's using PhonePe, right, will only be using Ola and will be using Zomato, and someone who's probably using Paytm can use Zomato, can use Ola और Uber both, right? तो इस तरीके के बहुत अच्छे studies है, right? Wow. वो Right? stack find है। वो stack defined है, right? वो stack defined है. That's Yeah. interesting. इसमें थोड़ा dig in करना। मतलब इट्स अ गुड बिहेवियर। फोन पे जो वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज करता है ना यूजर्स यूजेज की, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, देखना आप यूपीआई यूजेज की। उन यूपीआई यूजेज में एपोग्राफी देखना कि आप और कौन कौन से ऐप्स यूज होते हैं, तो आप देखोगे फोन पे के साथ वाले ऐप्स बहुत डिफरेंट है, पेटीएम के साथ वाले ऐप्स बहुत डिफरेंट है। राइट, इट्स गुड यार, इट्स गुड, फाइनली कुछ अच्छे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में। Yes, yes. And we touched upon one aspect I want to touch upon. So we touched upon this after Shark Tank का prep. What is the prep for before Shark Tank also? Because उस पे भी ज़्यादा highlight हुआ नहीं अभी तक. Like, how यार do you prepare for that before? यार ऑनेस्टली पता है, मैं शार्क टैंक कभी अप्लाई नहीं करने,
एंड आई टेल यू व्हाई, लाइक इट्स 10-12 साल पहले ना इंडियन का एक और वर्जन स्टार्ट हुआ था, उसमें भी अनुपम थे, right? वो ईटी पे आता था, इकोनॉमिक टाइम्स से किसी पे आता था, अच्छा शो था वो, लाइक मैंने देखा था कुछ लोगों की बेइज्जती होते हैं, एंड आई वाज लाइक कि भाई टीवी पे जाके बेइज्जती कभी, तो माय पॉइंट वाज ऑलवेज कि भाई टीवी पे जाके बेइज्जती नहीं करानी, भले ही हम कितनी अच्छी कंपनी हो, ठीक है, नहीं करेंगे। देन दिस वन डे आई वाज इन मुंबई, वेंचर कैटलिस्ट का एक फाउंडर्स डे होता है, राइट, जिसमें वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स को बुलाते हैं, एंड काफी अच्छा इवेंट होता है। तो वहां पे शार्क टैंक टीम वाज देयर, राइट, एंड वहां पे कैसा होता है ना कि मतलब एवरी पोर्टफोलियो फाउंडर हैज अ टेबल, एंड thousands ऑफ इन्वेस्टर दे कम टू रैपिड डेट यू, राइट, बहुत सही इवेंट होता है। तो वहां पे शार्क टैंक की टीम, राइट, उन लोग ने पूछा क्या कर रहे हैं, हमने बताया, दे वर लाइक यार यू गाइस कैन बिकम, यू आर अ मास प्रोडक्ट, एंड शार्क टैंक पे आने का मतलब ही है कि आप मास तक, व्हाई डोंट यू फिल अप द फॉर्म। आई वाज लाइक चलो ठीक है, कंसिडर करके देखते हैं। ऑन दैट नाइट इटसेल्फ पहला जो फॉर्म होता है, 4-5 क्वेश्चन होते, ज्यादा होते नहीं है, मैंने फिल कर दिया, राइट, शॉर्टलिस्ट हो गया। सेकंड फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म भी मैंने सबमिट कर दिया, वो भी शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर उसके बाद एक कॉल हुआ, उस पर कुछ डेटा एक्सचेंज हुआ। उसके 2 महीने के बाद, 1 महीने तक के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 महीने के बाद उन लोगों ने बोला कि एक स्टूडियो राउंड होगा बैंगलोर में, आप यहाँ आ जाओ। फिर वो स्टूडियो राउंड हुआ, फिर उसके बाद भी 2-2.5 महीना हुआ, कुछ नहीं आया, राइट। नवंबर में दे एंड अप कॉलिंग मी कि 15 दिन में आपको मुंबई आना है, शूटिंग के लिए। शूट है। मेरा 16 दिसंबर का शूट था, राइट, 16 दिसंबर को मेरा शूट हुआ था इन मुंबई। दे कवर्ड द ट्रैवल, स्टे एंड एवरीथिंग, राइट, बट हम लोग गए वहां पे, हम लोग अपनी पूरी पिच प्रिपेयर करके लेके गए थे, लाइक दे अंडरस्टूड आवर स्टोरी एंड एवरीथिंग। छोटी मोटी चीजें मॉडिफाई करवाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि टेलीविजन पे ये सब चीजें नहीं जा सकती और समथिंग, राइट, और आपको हिंदी में बोलना है। तो एंड जो जो चीजें हम लोग ने पिच में प्रेजेंट करी थी, उसके हिसाब से उन्होंने पहले कंटेंट भी मंगाया कि ये सब चीजें आप सच बोल रहे हो, कि आपके पास इनका प्रूफ है, राइट। वेरीफाई तो हुआ। वेरीफाई होता है पहले, ठीक है, जब मॉक सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद मॉक सेशंस होते हैं, राइट, जिसमें शार्क्स नहीं होते, बट हमारा पूरा स्टूडियो में पूरा सेम सेटअप, सेम वॉक, सेम कपड़े, हर एक चीज टेस्ट होती है, राइट, ताकि आप टाइम पे वो ना हो जाओ, घबरा ना जाओ, हर एक चीज हो जाता है। एंड इमेजिन ना, मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग इनटू टैंक, 500 कैमरा आपको वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी लाइट्स, द शार्क्स आर वेरी फार फ्रॉम यू। तो अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो उनको आपकी आवाज नहीं आएंगी, आपको उनकी आवाज नहीं आएंगी, इट्स ऑल माइक, राइट। तो जो ये हमारा माइक था, माइक से उनको स्पीकर से आवाज आ रही थी, और हमको स्पीकर से उनकी आवाज आ इतना डिस्टेंस था। रही। डिस्टेंस बहुत होता है, आवाज नहीं आती, आप चिल्ला के तो, सही बात है। राइट, राइट। तो वो पूरा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो वो प्रेप, मतलब ऑलमोस्ट दे टुक व्हाट, ऑलमोस्ट 1 वीक टू वॉक अस थ्रू विद द एंटायर एक्सपीरियंस। और वो एक हफ्ते में, और जिस दिन हमारा शूट होता है, उस दिन जब हम स्टूडियो में एंटर करते हैं, सुबह 6 बजे बुला, राइट, हमारा फोन लैपटॉप सब ले लिया जाता है, ऐसा क्यों? सो दैट वी डोंट कॉल और इन्फॉर्म एनीवन, और वी डोंट क्लिक सेल्फीज और व्हाटएवर, राइट। तो जब तक ये पूरा डील होता नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं होता है, तब तक हमको फोन नहीं दिया जाता है। वरना और फोन प्राइस देने के बाद, कोई और इन्वेस्ट कर। मतलब वो लोग ये भी बोलते हैं कि आप जब तक एपिसोड, क्योंकि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, एंड यू कैन नॉट रेज एनी फंडिंग बिटवीन आल्सो। या नहीं नहीं, यू कैन, हमने तो करी थी, हमको तो पता था ना भाई, हमको शार्क टैंक में, राइट। तो हम लोग तो किसी को बताया ही नहीं ना हमने, बट हमने बोला कि भाई वी हैव फंडिंग। दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस, दैट्स अ गुड Yeah, for sure. I mean, like anyone who is building in consumer space definitely should explore going to Tank, for sure. Yeah. amazing. Well, thanks a ton, but this is such an interesting space and segment. True, 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 true. Anything you want to share? Yeah, I think like these are exciting times. Market is, I think, the perfect valuation corrections already aa chuke hai market mein. Right. I think this is the perfect time for anyone who has ever thought of doing something, right? To create something and probably scale it to the people. Amazing. Yeah. Well, thanks a ton, Veer, and for your time. Really interesting and fun Same here, yeah. conversation. And wish you all the best. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot for having me.